केंद्रावरून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत। पहिल्याच मॅच मध्ये आज अक्षरशः मुगडे अंद्रेज काढलो, सगळ्यांचे फाव कुटुक घेतल्यान, सगळ्या बॉलरांच्या पाठभर वळ काढल्यान तो शिवम 10 षटकारांनिशी नाबाद 60 धावा आणि आजच्या सकाळच्या पहिल्याच एकाच सामन्यात किमान 6000 रुपयांची कमाई। 79 धावांचा टार्गेट अगदी सहज चेस झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात कोकण उल्सने जिंकलेलं टॉस घेतलेली फिल्डिंग, परत एकदा टार्गेट चेस करण्याचा इरादो, बाल पुरुष ब्लास्टर संघाची सलामीची जोडी मैदानात, प्रदीप स्ट्रायकर यांच्या दिशेन, मोहिदीन नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि बॉलिंग मार्कवर पुंडलिक। पुंडलिक उर्फ बाप्पा बॉलिंग मार्कवर। या स्पर्धेतलो एक सगळ्यात युवा खेळाडू, एज इज द ओनली फिगर फॉर मी, लिएंडर पेसचं वाक्य सगळ्यांनी ऐकलं असताना। वय फक्त कागदावर वाढता, आपला मन तरुण होया आणि ह्योच संदेश तुमका सगळ्यांका देण्याच्या इराद्यान पुंडलिक बॉलिंग मार्कवर। पहिलो चेंडू खोलवर टप्प्याचो, हलकेच अपील तर जोरदार होता, बॅट आणि बॉलचो काही संपर्क नाही, चेंडू रवलो मेडन। पुंडलिक कडसून ज्या गोलंदाजीची अपेक्षा होती सुरुवात तीच अतिशय अचूक सुरुवात। पहिलो चेंडू थेट पायाच्या दिशेन, पहिल्या चेंडूवर अजूनही धावसंख्येची सुरुवात होणार बाकी। दुसरा चेंडू परत एकदा टप्प पडल्यानंतर थोडंसं आतल्या दिशेन, सलग दुसरा चेंडू मेडन। पुंडलिकच्या गोलंदाजीची रनअप सुद्धा थोडासा वेगळा, पहिली सगळी पावला अतिशय वेगात, पण शेवटच्या 2 पावलात त्याचो धावण्याचा वेग थोडंसं कमी होता, पण त्यानंतर खांद्यातल्या ताकदीचा वापर। फुलटॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन, चेंडू बघता बघता गडग्याच्या दिशेन चौकारासाठी। हॅलो हॅलो चेक चेक टेस्ट 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 1। प्रदीपच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो पहिलो चौकार। तिसऱ्या चेंडूवर धावांची सुरुवात झाली, बालपुरुष ब्लास्टर संघ 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा। या मैदानावर पहिल्या 7 षटकात किती धावात प्रतिस्पर्धी संघाक रोखायचा मोठा प्रश्न पडलो, कारण ह्यापूर्वी 80 धावा चौथ्या षटकातच सहज चेस होताना आपण बघितले, आणि त्यामुळेच 7 षटकात किमान 80 90 100 धावा कुटण्याचा इरादो असतो पहिल्या फलंदाजीचो। मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर कंपल्सरी पॉवर प्लेच्या षटकात, एक लॉंग ऑनवर एक मिड विकेटवर। आतापर्यंत खूप टिच्चून गोलंदाजी, अचूक गोलंदाजी पुंडलिकची। 4 चेंडू झाले समाप्त, फक्त 5 धावा पुंडलिक उर्फ बाप्पा खर्च करताना। पहिल्यांदाच मोहिद्दीन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने, मोहिद्दीन कडसून षटकारांची अपेक्षा असलेली किमान 2 ह्या षटकात। परत एकदा वेगवान चेंडू होतो, बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही। सध्याच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतीय फलंदाजांनी जशी फलंदाजी केली, बरेचसे चेंडू ज्यांच्या अंगावर बसले, अंगावर ज्यांच्या चेंडूचे खुणा आले, अगदी तसेच खुणा आणणारे चेंडू पुंडलिक कडसून 2 फलंदाजांवर। शेवटचा चेंडू मात्र खूपच सुंदर, ऑफस्टम्पच्या थोडंसं बाहेर टप्प पडल्यानंतर थोडंसं आतल्या दिशेने स्विंग। पहिल्या सुंदर षटकाची झाली सांगता, पहिल्या ओव्हरीनंतर धावसंख्या फक्त 5 रन्सावर। ज्या मैदानावर 10 ते 15 मिनिटांपूर्वी आपण सलग 5 षटकारांची आतषबाजी बघितली, त्याच मैदानावर त्याच पिचवर पुंडलिकने 6 चेंडूत फक्त 5 धावा खर्च केले। खूपच सुंदर सुरुवात आपल्या गोलंदाजीची। म्हणजे टॉस जिंकून पहिली फिल्डिंग घेताना कोकण वुल्सने जा टार्गेट ठरवलेला त्या टार्गेटच्या दिशेने अगदी अचूक वाटचाल, निदान पहिल्या षटकात तरी
दुसऱ्या षटकात बॉलिंगसाठी नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर अभि वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरा षटक घेऊन 7 षटकांचा हे सामना. पहिली 2 षटक कंपल्सरी पॉवर प्ले, तिसऱ्यापासून 6व्या षटकापर्यंत एक बॅट्समन चॉईस पॉवर प्ले आणि पॉवर प्लेच्या प्रत्येक षटकात 3 वेगवेगळे बॉलर तुमका बघूक मिळतले. अभि बॉलिंग मार्कवर. प्रदीप रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, फ्लॅट 6 डायरेक्ट गडग्यावर षटकारासाठी. प्रवीणच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो बालपुरुष ब्लास्टर संघासाठी हो पहिलो षटकार. प्रदीपच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो षटकार. धावसंख्या 11 रन्सावर. पुलटॉस चेंडू होतो. प्रदीपने आधीच ठरवलेला रिव्हर्स शॉट खेळायचो, स्विच हिट खेळायचो आणि तो फटको अतिशय सुंदर डीप पॉइंट किंवा स्क्वेअर लेग म्हणा ह्या खेळाडूच्या कपडावरून षटकारासाठी फ्लॅट 6 प्रदीपचं पहिलो षटकार. परत एकदा रिव्हर्सचा शॉट, परत एकदा फाईन लेगच्या दिशेन चौकारासाठी. आता मात्र कर्णधार आणि बॉलर ह्यामध्ये थोडीशी बातचीत होतली. पहिल्या षटकात पुंडलिकने खूप सुंदर गोलंदाजी केली, पण त्यानंतर अभिचे दोनही चेंडू फुलटॉस, म्हणजे जो खेळाडू अभिकडे गेलो असतो त्यांनी आवर्जून चांगला असताना सारायल्या चेंडू टाक. जा काय समोर केलेला पीच दिसतात त्याच्यात टप्पो पडणं गरजेचं अभिचो, कारण टप्पो पडल्यानंतर पीच कडसून मिळणारी मदत आपण पुंडलिकसाठी केलेली मदत पीच कडसून बघितलेली, तोच इरादा असतो अभिचो. तिसरो चेंडू प्रदीपसाठी. परत एकदा रिव्हर्सचा फटको, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि सुटलेलो झेल. एक धाव मिळाली. चौकार षटकारांची आतषबाजी करणाऱ्या प्रदीपचो झेल खेळाडून अगदी सहज साधो सोपं वाटणारो झेल सुडलो. देव देता आणि निरांकार पाठ घेता अशी क्षेत्ररक्षकांची कामगिरी. प्रदीप सारख्या कसलेल्या फलंदाजाक जीवदान देणं नक्कीच संघासाठी हानिकारक होण्याची शक्यता. परत एकदा अभि बॉलिंग मार्कवर. धावसंख्या 16 रन्सावर. दुसरा षटक प्रगतीपथावर. कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, चेंडू राहुलो मेडन. धावसंख्या 16 रन्सावर स्थिरावलेली. दुसरा षटक प्रगतीपथावर. यापूर्वीच्या षटकात आपण बघितलेले पहिल्याच षटकात 14 धावा झालेले, दुसऱ्या षटकात 16च्या जवळपास धावा झालेले. आता मात्र धावसंख्या एक लगाम ह्या दुसऱ्या आजच्या दिवसातल्या सामन्यात. कोलवा टप्प्याचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जाऊन चेंडू विसावलो. पहिला कलाम लागला आणि पुंडलिकच्या हातात चेंडू जाऊन विसावलो आणि मोहिद्दीन वैयक्तिक 1 आणि सांघिक 16 रन्सावर डगआउटच्या दिशेने, तंबूच्या दिशेने. कालच्या दिवसात सलग 5 षटकार ज्याच्या बॅटमधून आपण बघितले, तो मोहिद्दीन आज फक्त 1 धाव करून तंबूच्या दिशेने. मोठं धक्का संघासाठी. बालपुरुष ब्लास्टर संघ ह्या धक्क्यातून सावरण्याच्या इराद्यान योगेश नवीन फलंदाज. सन्मान दिलो योगेशने अभिच्या ह्या चेंडूक. 2 षटकांचा खेळ झालो समाप्त आणि पहिली फलंदाजी करताना बालपुरुष ब्लास्टर संघ 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या स्थिरावली ती 16 रन्सावर.
दोन षटकांचा खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या फक्त 16 रन्सावर बालपुरुष ब्लास्टर संघ. आपल्या नावासारखीच मैदानावर चौकार षटकारांची आतषबाजी ब्लास्ट करूची लागते तुमका. ह्या एलिमिनेटरच्या पहिल्या सामन्यात तुमका चांगला टार्गेट ठेवण्यासाठी कोकण उल संघासमोर. कोलवा टप्प्याचा चेंडू, बॅट्समन बीट, विकेट किपर सुद्धा बीट. चेंडू राहुल मेडन. धावसंख्या 16 रन्सावर स्थिरावली. 4 चेंडू ही धावसंख्या स्थिरावली 16 रन्सावर. मायनिंगचो भरलेलो ट्रक रस्त्याच्या कडेक गेलो तर जसं रुतान बसता अगदी तशीच धावसंख्या रुतान बसलेली. गरज असा टोचन करण्याची. प्रदीप आणि योगेश दोघांकडून जबाबदारी असा ही टोचनाची आणि तोच टोचन करणारा फटको लॉंगॉनच्या कपडावरसून षटकारासाठी. बऱ्याच कालावधीनंतर षटकार आणि धावसंख्या षटकाराबरोबर वाढली. दुरियेचो डबल गेम 22 रन्सावर. षटकारांची धावसंख्या 22. तिसरा षटक प्रगतीपथावर. तुषार बॉलिंग मार्कवर 2 चेंडू समाप्त. बॅटची कट घेऊन चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने. खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण शॉट थर्ड मॅन कडसून. चेंडू राहुलो मेडन. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो रेडिओ समालोचनाचो हिंदी आवाज अशोक नाईक सर, त्यांच्या समवेत हरीश काकोडकर सर, अजय बागकर सर, दीपेश या सगळ्यांचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत. धावसंख्या 22 रन्सावर स्थिरावलेली. चेंडू हवेत. पॉइंट क्षेत्ररक्षक मात्र झेलपेक्षा चेंडू अडवण्यात धन्यता मानताना. एक धाव आणि त्यानंतर झालेलं ओव्हर थ्रो. दुसरं रन सुद्धा पूर्ण. हरीश सर पहिलं रन्स मिळत की नाही शंका होती. त्या जागेवर दुसरं रन अगदी सहज, म्हणजे नको नको जाऊया आणि व्हाईन चाटून खाऊया. 2 रन्सांची धावसंख्या पोहोचली 2 डझनावर 24 रन्सावर. हळूहळू हापूस आंब्याचो सीझन चालू होतो आणि हापूस आंब्याचो व्यवहार ज्या पटीत चालता तो व्यवहार म्हणजे डझनाचो. 2 डझन रन्सावर रिव्हर्स स्वीपचा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. 1 धाव मिळाली. एकेरी धावेनीची धावसंख्या पोहोचली 25 रन्सावर. हरीश सर वेगवेगळे शॉट क्रिकेटमध्ये जसं अझरुद्दीन सरांचं फ्लिक ऑफ दी रिस्ट जे का म्हटलं जाता क्रिकेटमध्ये ह्यो शॉट केविन पीटरसनने आणलो, जे का रिव्हर्स स्वीप म्हणा किंवा स्विच हिट म्हणा. अर्थात रिव्हर्स स्वीप आणि स्विच हिट या 2 शॉटमध्ये जमीन आसमानाचा फरक हा. जर वेळ मिळाला तर नक्कीच तो फरक सुद्धा तुमका सांगण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या 25 रन्सावर. तिसरा षटक प्रगतीपथावर. आता मात्र टिच्चून गोलंदाजी तुषारकडून बघूक मिळाली. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, पण त्यानंतर मात्र फक्त एकेरी धावसंख्येवर समाधान पुढच्या चेंडूंवर. तिसरा षटक प्रगतीपथावर. धावसंख्या 25. बालपुरुष ब्लास्टर संघ पहिली फलंदाजी. आणि ज्या मैदानावर 80 धावा अगदी सहज चेस, त्या मैदानावर पहिल्या 7 ओव्हरीत किती टार्गेट उभ्या करायचा ह्यो एक मोठो गहन प्रश्न बालपुरुष संघासमोर. कोलवा टप्प्याचा चेंडू गोलंदाजाच्या कपडावरसून थेट वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि योगेशच्या नावाचा कलाम लागला. योगेश षटकार मारण्याच्या नादात तंबूच्या दिशेन करूक गेलो नरकासूर. तयार झालो संकासूर. योगेश तंबूच्या दिशेने नवीन फलंदाज मैदानात. हरीश सर जेव्हा रायटी बॅट्समन ग्रीप न बदलता स्टान्स बदलून शॉट खेळतात तेव्हा त्याला रिव्हर्स स्वीप म्हणणं योग्य असतं, पण बॅट्समन जेव्हा ग्रीप पण बदलता आणि स्टान्स पण बदलता तेव्हा त्याला स्विच हिट म्हटलं जातं. जो शॉट दक्षिण आफ्रिकेच्या केविन पीटरसनने जगतावर आणलो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या. आता केविन पीटरसन दक्षिण आफ्रिकेचो कसो ह्यो पण प्रश्न पडलो असतलो. जो कायम खेळलो इंग्लंडकडसून, पण त्याचा जन्म झालेलो दक्षिण आफ्रिकेत. तिलकरत्न दिलशानचो दिल स्कूप आसात, मोहम्मद अझरुद्दीनचो फ्लिक आसात, कपिल देव, रोहित शर्मा, ब्रायन लाराचो नटराज शॉट आसात, MS धोनीचो हेलिकॉप्टर शॉट आसात, वीरेंद्र सेहवागचो अप्पर कट आसात. नवीन नवीन शॉट क्रिकेटमध्ये इव्हेंट झाले आणि हे शॉट आपण सगळ्यांनी डोक्यावर घेतले. तोच शॉट जो टेनिस क्रिकेटवर
आज सुद्धा अगदी महत्त्वाचा शॉट म्हटलं जातं रिव्हर्स स्वीप किंवा स्विच हिट आणि गोवा राज्यातल्या एका खेळाडून हे फटको इतकं प्रसिद्ध केलो की प्रत्येक खेळाडून प्रत्येक ओव्हरीच्या पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीपचा षटकार मारण्याचा प्रयत्न ठेवण्यासाठी नाव आदर्श ठेवला होता म्हणजे सनम साळगावकर. आजही सनमचं नाव रिव्हर्स स्वीपच्या शॉटसाठी अगदी आदरान घेतलं जातं. तीन षटकांचा खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या 25 रन्सावर. आता मात्र हळूहळू मोठ्या फटक्यांवर लक्ष केंद्रित करतो लागत बालपुरुष ब्लास्टर संघासाठी. चौथ्या षटकाची सुरुवात. स्वीपचा फटको डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. चेंडू आखांडाच्या दिशेने चौकारासाठी आणि ह्या चौकारांशी धावसंख्या स्थिरावली 29 रन्सावर. आणि बादल आता तो म्हणत होता रिव्हर्स स्विच हिट आणि आता म्हाका कळयलें घेता ऑर्गनायझर्सान की ह्या टुर्नामेंटाक रिव्हर्स का बादशाह म्हणटा तो प्रमोद, जी नोरा प्रीमियर लीगाचो बादशाह रिव्हर्स म्हणटा तो प्रमोदा नांवार हे व्हडले रिव्हर्स हिटाचो बादशाह म्हणून ताका नाव ऑलरेडी नावलौकीक जाल्लें आसा. धन्यवाद हरीश, ही महत्वाची माहिती तुम्ही सांगितलात. या मैदानावर तो रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह प्रमोद, तुझा सुद्धा स्वागत असा मैदानावर. लॉंग ऑनच्या दिशेने पुंडलिक चेंडूच्या मागे फक्त एक धाव मिळतली. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या स्थिरावली 30 रन्सावर. 30 धावसंख्या. चौथा षटक प्रगतीपथावर. बालपुरुष ब्लास्टर संघ 7 षटकांचा सामनो असा आणि 7 षटकातले 3 ओव्हरी संपले. शेवटच्या 4 षटकातले 2 चेंडू सुद्धा संपले. जा काय करूचा असा ता लवकर. मालवणी कवी दादा मडकईकरांची एक कविता हरीश यानंतर तुमका आठवण करून देत आहे. ती कविता खास बालपुरुष ब्लास्टर संघासाठी. बॅट आणि बॉलचो काय संपर्क नाही. परत एकदा चेंडू रवलो मेडन. दादा मडकईकरांची एक कविता असा पावडर लायसर बाजार लागलो. जर बाजार करूचो असा तर पावडर लावण्यात जास्त वेळ खर्च करू नकात आणि मोठा टार्गेट उभ्या करूचा असता तर सेट होण्यात जास्त चेंडू खर्च करू नकात. धावसंख्या बरोच काळ स्थिरावली 30 रन्सावर. तिसरा चेंडू समाप्त. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण. नक्की एक धाव आपल्या संघासाठी वाचवली. एका रन्सानिशी धावसंख्या 31 रन्सावर. टेनिस क्रिकेटवर हरीश सर रिव्हर्स स्वीप स्विच हिट ह्या फटक्याचा खूपच महत्व, पण लेदर क्रिकेटवर अजूनही सगळ्यांका आठवता माईक गेटिंगचो रिव्हर्स स्वीप. फसलेलो रिव्हर्स स्वीप आणि त्यानंतर इंग्लंडने गमावलेलो वर्ल्ड कप. गेल्या वर्षी मात्र खूप वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर इंग्लंडने वर्ल्ड कप जिंकलो. दुर्दैव फक्त एकच असा, इंग्लंडचो खयचोच खेळाडू सांगू शकणार नाही इंग्लंडने किती चेंडू, किती बॉल किंवा किती रन्सान तो वर्ल्ड कप जिंकलेलो. आवाज तर इलेलो. विकेट किपर कडसून कदाचित झेल सुटलो अशी बॉलरची रिॲक्शन. परत एकदा चेंडू मेडन. चौथ्या षटकातलो 5वं चेंडू समाप्त. धावसंख्या 31 रन्सावर स्थिरावलेली. ज्या अभिनं दुसऱ्या षटकात चौकार षटकार खर्च केलेले पहिल्या 2 चेंडूवर, तो अभि ह्या षटकात मात्र 5 चेंडूत फक्त 6 धावा खर्च. तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू. चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अभिच्या बॉलिंग मार्कवर लागलेला कलाम. तिसरा खेळाडू डगआउटच्या दिशेने. सांघिक धावसंख्या फक्त 31 असताना. शैलेश नार्वेकर मातसो कॉमेंट्री बॉक्साकडे येवचो. शैलेश बाब नार्वेकर कॉमेंट्री बॉक्साकडे येवचो. अभी आयलो आसा. सुपर स्पार्टन्स
भायर पडले आपूण अभी म्हणटा अजून आपूण कोण बरे क्रिकेट खेळटा ताका सपोर्ट करता. सुपर स्पार्टन्स टीम बरी आशिल्ली पेपरार आनी पेपर टायगर्सच उरले. ग्राउंडार चड परफॉर्मन्स बरो जालो ना ह्या वर्सा कारण 2 वर्सां तांणी बरी परफॉर्मन्स केल्ले पण थर्ड इयर बऱ्यो ज्यो टिमी ओनर्सांनी बरे तकली लायिल्ली ज्या प्लेयर्सांक त्या प्लेयर्सांनी परफॉर्म केलां आनी थोड्या ओनर्सांनी अशें चिंतलें की जी लास्ट फर्स्ट सेकंड सिजनां नांवां आसतलीं आमी तांकांच घेवन मुखार या तें म्हाका दिसता खंय तरी फेल ठरिल्लें आसा. सो थोड्यांनी भरपूर स्टडी केल्ली ओनर्सांनी आनी आज आमी पळयता की ते प्लेयर कशे जबरदस्त अशे परफॉर्मन्स करता. आतांच शिवमान कसो शो केलो म्हाका दिसनाशिल्लें कोणाक खबर आशिल्लें यशवंत बांदोडकरान ताका सारको नोट केल्लो आनी त्या खातीर तो असो शो करपाक पावलो. फूल सपोर्ट फ्रॉम ओनर्स आनी बरो पीक. So Gouresh now. I remember still Gouresh is that over against Mohiuddin. That time he was taken for 5 sixes and 1 boundary. That over costed almost 36 runs. Although it was not of 6 sixes of 6 balls, but it was 5 sixes, 1 boundary and 2 wides, I guess. So that was Mohiuddin that is going after him. And now they have lost important wickets, but good here for them is Pradeep still there. This batting lineup is very deep, in fact, but most of the scoring, that is the bulk of the scoring. Oh, that was close, slightly wide down the leg side. The leg stump was exposed, but umpire says it was still going down the leg side. It was Mohiuddin, Sushant, and the left hand Yogesh who done the bulk of the scoring for this tournament for Blasters, and that's the reason why they are playing this eliminator match. Right now, very good job done here by most of the bowlers of Konkan Wolves getting top 3 batsmen out. Pradeep Nawalkar is still the danger man. And if Blasters have to get somewhere close to around 80-85 runs after completion of 7 overs, then Pradeep is the key for that success. No chance. That was a short ball, but mixing it up, Gouresh. He knows that what mistake he had done against Mohiuddin. He is not trying to commit. He's bowling in the good length areas, the quickers, the slower balls, the variations, and more often than not, most of the batsmen doesn't have that much caliber or strength to play on the offside. They just want power to be used, and power is the only thing that is in tennis ball cricket. Only few players that we see have the caliber to play beautiful shots in the covers and extra cover. Once again, very good piece of bowling. Chance for run out. Pradeep Nawalkar, risky. Oh, that could have been curtains. That could have been curtains for Pradeep. By signal by umpire. No calling whatsoever. The camp of Blasters looking very tense. They know that this is not a big total at this stage. Score is 34. Fifth over in progress, and the score is not moving at all. It is even the snail is moving faster than the score of Blasters right now. Oh, that's a powerful shot. That's a powerful shot. They required that very badly. A person stranded in the desert looking for the water, and this was like a water in the desert for this team. Score moves on to 40. And this match going on live on YouTube. You can expect what I'm telling you right now, that people in USA, people in Kuwait, people in Saudi are watching this tournament. And they are telling that we are enjoying this game. Especially the Goans, wide signal by umpire. Goans who are there abroad and they love the game of cricket for the jobs. They are settled outside. And I got many messages on Facebook and my Insta page as well asking for the success of this tournament. And they are still watching. They are enjoying this game.
They are enjoying because this is a very, very well organized tournament. Good jerseys, good piece of wicket on display. Especially, and I should give credit to Darbanoda Panchayat as well, because without them, this ground, which looking very green, the pitch is looking good, and the facilities that has been provided should not be over here. So full credit to Darbanoda Panchayat for the wonderful effort that they have put it on the ground. Because it is very difficult. I have seen in many parts of Goa, at the start, when the ground is inaugurated, it looks very good, but it has to be maintained, it has to be kept well, and for that a lot of effort is required from many of the well-wishers around. And I request, and I'll give credit to Vinayak Gaons, Balaji, and Dataraj Gaons, along with Yogesh Bandodkar and many other who, as a Punch members, have taken this thing forward. They have to go on to the GCA. Now there will be few pitches over here for the youngsters. Under 17, under 15 school matches will be played over here, which will give rise to youngsters, upcoming talents from Darbanoda Uzgaon area to move forward in the game of cricket. And that's the reason why this Panchayat should be credited, because this is one of the best tournaments to be organized in Darbanoda Uzgaon area, and I can say definitely one among the best in Goa as well. Bappa will be bowling his second over, as two bowlers are allowed to bowl 2 overs. Abhi has bowled his 2 overs, and now Pundlik Bappa coming in to bowl his second over and 6th over of the innings for Konkan Wolves. So batting power play has been taken. Batsman on strike, Arun. Have to see what is going on right now. Elliston coming on the field. Two bowlers can be used in 3 overs of a batting power play. So batting power play has been taken. Fielders inside. Let's see where the, Arun and Pradeep will be eyeing. Oh, this is fantastic bowling from Bappa. Oh, this is experience, this is skill, this is class, this is tenacity, and this is audacity of Bappa to bowl in the same region, same areas each and every time, and troubling all the batsmen. Arun going back in the pavilion. DJ Munna. So, very nice catch taken here by the keeper. Bappa bowling in the right areas, experience. And still bowling well. I always give caliber to the experience. Paresh, the keeper. Once again, this is powerful strike. Mammoth hitting here from the bat of new batsman Madan. What a strike that was. They need many more of the sixes. Score moves on to 49 with that 6. One shot of 50. If they have to beat this strong batting side of Konkan Wolves, they have to get more than 75 at least. That will be the thinking of Blasters camp. Is he going for one more shot? It has gone up in the air. Fielder after it. 4 fielders running. Ball going towards the fence. And 4 runs. I could not see from here whether it was going for 4 runs. But finally something here to cheer for Blasters. 50 for Blasters into the 6th over. Score exactly 53.
But good that they are getting the boundaries and sixes. They were waiting for a long time. Unlucky here from Bappa. He doesn't want to bowl full toss, but that was trying for the Yorker length delivery. Didn't go right, and batsman getting a boundary in the end. Sometimes this happens to even experienced players like Bappa. Try to bowl more pace, vary the line length, and misses the trajectory. Wide ball signal, trying the slower ball, change of pace. Fielders, all fielders inside on the offsides except the long off. And most of the fielders, two fielders in fact, kept in the deep. Once again trying the same shot, slightly short. It was not in the zone of the batsman to swing the bat that he gets generally. So Bappa is trying to make a comeback in this over. So far 11 runs have come off this over of Bappa. This time right in the block hole, full length ball. Pradeep will be on strike. Although Pradeep is there for a long time, but he could not get many sixes or boundaries that he would have hoped. Because he is a fantastic cricketer. He was the man of the series for Uzgaon Premier League. And he was rightly picked by Blasters in his side. Because they know his caliber. He is a wonderful bowler as well and a batsman. And most of the all-rounders have been gone for a lot of amount in auction. Oh, this is the reason why. This is the reason why. He is the man of the series in Uzgaon Premier League. This guy has got a ball rolling here for a Blasters camp. Score moves on to 61. What a good over that was for the Blasters. Bappa taken apart. "18 runs have come off the last overs from Bappa. So something to cheer, something making a comeback here. Blasters requesting शैलेश इलियास पंते. शैलेश नाल्या पंते बाब म्हणटा ताका. जर तर तुम्ही आसा जाल्यार मातशे माटवाकडे यात. And lots of prizes also given for this tournament. Just now in the morning I had announced, Ashfaq DM had announced that whoever scores 6 balls, 6 sixes, 5,000 will be awarded each and every player or each and every over or each and every batsman. And Shivam comes and in the very first match it takes away 5,000. Who is saying there is no money in sports? Cricket is giving a lot of money for many, especially in Jinora Premier League. A lot of 500s, 5,000 also taken because of their good game. And wide signal. And I welcome here Punch member of Sawadin Panchayat, Amey Naik, and my good friend along with Nilesh Tari, to watch this game of cricket. One of the best cricketers that I've seen is Amey Naik, not playing nowadays. He made the name of Sawadim. Oh, they want Pradeep to be on strike. And that's the reason there was a run out there. More strike for Pradeep. More runs will be scored by Blasters. So one more wicket, a suicide committed here by the batsman to give strike to Pradeep in the form of run out. That was I was mentioning about Amey Naik. I've seen him. He was one of the best. And Sawadim name and Sawadin Panchayat name as well. All across Goa, in Parra, in Mapsa, in Panjim, and all across Goa. Bicholi, he was a star in Bicholi. He's still in fact loved in Bicholi a lot. Bappa is telling Amey, put on weight. Try to reduce the weight and come back in the game, because I am playing as well at this age, so there is a chance and opportunity for you to play as well. This time very well bowled, trying the helicopter shot right in the block hole. Wonderful fielding there from Bappa. No chance, absolutely no chance when he is on the field. This is what all youngsters should learn from him. Age is just a number for Bappa and for many others.
keeping the fitness going, keeping the game of cricket because of the love and the passion that he has inside for this game. This time slightly wide, hoping that the umpire will not give it a wide, but umpires are very experienced. Wide signal, 1 to the extra, score moves on to 64. Short ball, it should have been wide. Kedar, yeah, wanted to commit a harakiri for a run out, but lucky there. In the end, they complete a single. They want Pradeep to come on strike anyhow. Score moves on to 65. They require another 2 sixes at least. Close towards the 80-run mark will be a good total here for this side. Meanwhile, I'll welcome Vallabh Dalvi also. Was the manager and also the secretary of Shining Star Sports Club. Oh, this is Mammoth on his bat, and this is a humongous strike. A massive hitter. Bang, she goes out of the ground. Four balls bowled, 2 balls left. Require a ball that has gone to Sadgiri's house. That's the reason why it is taking time to come back in the field of play. Rutik, so far so good over that was, but finally 6 from Pradeep. That was the 5th 6th of the innings so far for Pradeep. Wonderful innings from Pradeep for Blasters. Oh, this time he gets a boundary. Lucky break by signal by umpire. It doesn't matter how they come, as far as they come. Pile on the runs. Pile on as much as you get. Score moves on to 75. Although this is not of the bat from Pradeep, but Pradeep still requires 4 runs. Pradeep is on 46. Lone warrior, lone fighter here, playing out of his skins to get some sort of respect to this total for Blasters. Respect, it doesn't come, respect is earned, and that is what Pradeep has earned. Pradeep has earned respect of these team members and all the spectators around for his wonderful game of cricket. Oh, that was a good ball. That was a good ball. Chance of a run out and should be out. Good keeping there from Paresh. That completes the 7 overs that were allotted for Blasters. Great knock here from Pradeep, although he could not accomplish it. His 50 runs, 4 short. 75 is the total and 76 is the target that has been set here for Konkan Wolves by Blasters. Mohiddin was out very early, scoring just a single. Yogesh went without troubling the scorers. Sushant with 1 boundary, 5. Good knock of cameo of 11 runs from Madan. Babu हांगा मातसो दत्तराज गांवस. दत्तराज गांवस मातसो बेगीन यो. ओके, आनी एक अनाउन्समेंट प्रायजां आनी पयशांक बरेच प्लेयर्सांक मेळटा आनी चलत आसा. तशेंच शिवमाक आनी प्रायजां आयल्या. बालाजी गांवस तशेंच शैलेश हाणें शिवमाक 500 रुपया अशें प्रायज इनाम दिल्लें आसा ताची जबरदस्त बॅटिंग स्किला खातीर. 500 म्हळ्यार ताका 1000 रुपया मेळटा. तशेंच राजदीप बाबान रामूक हाका म्हणजे रामदासाक 500 रुपयाचें इनाम दिल्लें आसा कॅचीक लागून. सो हांव मागतां शिवम आनी रामू,
शिवम आणि रामू तुम्ही जर खंय आसात जाल्यार मातशे कडेन येयात आनी तुमची जी कॅश प्रायजां तुमकां लोकांनी म्हळ्यार क्रिकेट लवर्सांनी मोगिनी तुमकां दिल्ली आसा ती मातशी येवन कलेक्ट करा. ₹75 रन काडिल्ल्या 76 रिक्वायर्ड आसा. शिवम आणि रामू आणि तशेंच अशफाक डीएम आसा त्याचे 5000 इनाम हेंय शिवमाक गेल्लें आसा. अशफाक डीएम जर तुम्ही हांगा आसा मातशे कडेन येयात. अशफाक डीएम बाब तुम्ही मातशे कडेन येयात. तसोच हांव मागतां तशेंच हांव मागतां शैलेश बाब, बालाजी गांवस आणि राजदीप बाब तुम्ही जर तर आसा जाल्यार तुम्ही मातशे हांगा येयात. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जो स्टँड आसा प्लॅटफॉर्म आसा थंय मातशे येयात. बालाजी गांवस, शैलेश, पंते आणि राजदीप तशेंच अशफाक डीएम बाब तुम्ही जर तर आसात जाल्यार हांगा ही प्रायज तुमच्या हातांतल्यान दिल्ली गेली वतली. शिवम आणि रामू मातशे येवन तुमचे प्रायज कलेक्ट करा. शिवम आणि रामू जर तुम्ही खंय आसात. हॅलो, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा समोर जो रस्तो आसा ज्यांच्यांनी 4 व्हिलर दवरल्या मातशे गाडयो काडच्या. एक ऑफिसर लेवलचो कोण तरी येवपाचो आसा हांगा प्लीज. डेप्युटी कलेक्टर रोडार जितल्यो गाडी आसा 4 व्हिलर मातशे कृपया गाडी काडच्यो तुमकां लागून रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. So 76 runs to win. Shivaji and Abhi to start. Many games we have seen a different opening batsman, different opening pair, the lineup being changed by the batting side. And that is the same scenario here as well for Konkan Bulls. They want to keep Thokle back, and that's a good decision. That's a very good decision in this scenario because Thokle plays very well off the old ball. And he's one of the best batsmen that we have seen, best batsman in TPL as well, kept lower down where he plays much better than in top order. Oh, good start, big appeal, don't know for why. And I'll request Sarpanch member of Savadin Panchayat and my good friend Amey Naik along with Vallabh Dalvi to be present because the man of the match prize along with highest sixes and highest wicket in this match will be given from your hands. This was a cut shot between point and short. Third man wide, asking to be hit, and very well placed in the gap. So 4 runs to start the proceedings here for Shivaji. Oh, good comeback. 76 runs if you consider in 48 balls, 42 balls in fact. It's almost close to around 12 runs per over. So not a big task. Asking this is not a big ground. Sixes are easy to come by. And
if Blasters want to make a comeback, they have to get early breakthrough. They have to get 2-3 wickets. They have to take those catches, create a chance of a run out. If at all there is a half chance, convert it into a full chance. This time, very nicely fielded. Chance of a run out is exactly I was mentioning. Chance. Oh, luck is favoring. The god is favoring Konkan Wolves over here. It didn't come in the hands. Abhi is asking, was there a run? Was that needed? Abhi is a man of big stature, so it is not easy for him once he goes back to come back again in that full swing of a run-up. Lucky break here. Heart was in the mouth of owners and all the supporters of Konkan Wolves. Good crowd slowly and steadily coming in on this ground at Darbandora Panchayat. Watching these good matches between 4 top teams. This is in the air. Who is taking the catch? And he takes it. So that's the first breakthrough here. Full toss ball missed by Abhi. And Pradeep gets good luck going in Blasters' way. This should have gone for a 4 or a 6, but Abhi gives his wicket away off a full toss. 5. संजय नागवेकर आणि कबीर सदानंद हे ह्या आयच्या दिसाचे प्राइज सेरेमनी ताजे चीफ गेस्ट आणि गेस्ट ऑफ ऑनर आसा. तच बरोबर धारबांदोडचे जे पंच मेंबर आसा तेय माचेर आसतले. कबीर सदानंद स्पेशल इन्वायटी आसा आणि 5,000 जे इनाम आशिल्ले ते शिवमाक म्हणल्यार शिवमाच्या वतीन रामू घेता 5,000चे. तशेंच शैलेश पंते हाका मागता ताणें जे प्रायज ताणें दिल्लें तेंय शिवमाक दिवचें. शैलेश पंते आणि बालाजी गांवस जर आसा जाल्यार. Oh, good piece of bowling here. Very good comeback. So good start here, Blasters. Don't know why they are going towards the umpire. There was half-outed appeal there. I know, I can understand this is an important context. They have to get the wickets. It's the same start that Blasters have got. It's a repetition from Konkan Wolves. It's 5 for the loss of 1. So back after that first over. Good start here from Pradeep. Rameshwar will be on strike against Sushant. Good leg spinner. So far, what we have seen from Sushant is a mixed bag. He has taken wickets, but he has been taken for runs as well. Sometimes the ball lands correctly, sometimes the ball doesn't land correctly and been taken apart if it doesn't fall in the right place. So Sushant with his leg spin. Oh, this is nicely played, very nicely played, and 6 runs. With the spin, the player plays Rameshwar. He has got the power and the style that he has put in looked very elegant. One thing he has done right, he didn't try to play across, played straight. This time he plays across, once again 6 runs.
So he has taken Sushant apart in the first two ball itself. Pressure on Sushant. There is no respect for any bowler whatsoever in this Jinora Premier League. Name, fame, pace, spin doesn't matter. What matters is the sixes and the boundaries, and they are going and getting the glory sixes that they want. This time in the air, very nicely played. Oh, this is classic. This is absolute classic shot. One just wide off, long off, one more towards extra cover, and one in the deep mid-wicket region. What is the answer for Sushant now? Hat-trick of sixes against his name. Hands on the hips of most of the players because their good bowler has been taken apart. This is exactly what I was mentioning. Sushant is not getting that line, that length perfectly going in this tournament so far. Although he has picked up wickets, he is into pressure, a lot of pressure now. Very nicely played, very expensive over. 22 runs off the first four balls. Oh ho! Enjoying this onslaught here from batsman Rameshwar. What is the answer? What is the answer from this team? Once again, looks like the mindset. I feel he is going to bowl the quicker ball, not the leg spinner. This is what I feel. He bowls a leg spinner. He played beautifully in the air. Fielder going after it and he takes a catch. What a catch. That's a good running catch. They got the fielder inside. I tell you, mind you, this is not an easy catch. This is a good running catch. Very difficult. He watched the ball till the last moment. It juggled in the hands, but he was still watching the ball, and that's the reason why Kedar has taken this stunner. Rameshwar back in the pavilion, and finally something to cheer for Sushant. शैलेश आणि शिवम मातसो यो प्रायज घेवपाक. अशफाक डीएम बाप तुका प्रायज दितलो, तुगेलें जें इनाम आसा. शिवम मातसो यो 5,000. This was way too wide, way too wide. You can understand that he is under tremendous pressure here. Score is 28 runs. We have not even finished the second over. One ball remaining in this over so far. Oh, this is in the air. Luck favoring the batsman, favoring the brave. Shivaji, always the warrior. So it's 29 runs after completion of 2 overs. नंदन जर खंय आसा मातसो माचे कडेन यो. एलिस्टन बाब तुका राविल्लो आसा. ओके नंदन So change in commentary as well. Over to your youngster here from Dan Baroda, upcoming talent in commentary, Munna Mulani.
थैंक यू हरीश सर। स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन्स कोकन वुल्स का। नए गेंदबाज प्रदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और उठाया है, बल्ले पे ठीक से आई नहीं गेंद, और ये आसान सा कैच, और वापस जाना होगा शिवाजी को। कैमरा गणेश 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 हाँ अजय खूप झाला बरं. अशफाक डीएम ज्यांनी प्राइज घोषित केलेले 5,000 रुपया स सिक्सरी मारपी प्लेयराक, आणि प्राइज जेका मेळ्ळेले आसा तो शिवम ऑफ धारेश्वरी एम्पावर्ड, जेणी 6 बॉलांत 6 सिक्सरी मारल्यो आणि प्राइज आपल्या नावार केले 5,000 रुपया. ओ बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, और सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा कोकन वुल्स की टीम को. नए बल्लेबाज गौरेश आए हैं, देखते हैं कि गौरेश अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं. यहाँ पे पूरा दारोमदार गौरेश के कंधों पर 2 विकेट खो चुके हैं अभी टीम. प्रदीप की अगली गेंद, और ये बढ़िया गेंद, खासी लंबी अपील, लेकिन अंपायर पे प्रभाव नहीं, और अंपायर ने नकारा निर्णय से. अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है प्रदीप की, काफी खासी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप. अभी तक बाजुए खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, एक विकेट भी चटकाया इस ओवर की पिछली गेंद पे, और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रदीप द्वारा. और ये उठा के मारा है, लेकिन पावर उतनी नहीं, फील्डर मौजूद थे, कैच का मौका था, मौके को गवाया, कैच छूटा और साथ ही साथ दिल भी टूटा बाल पुरुष ब्लास्टर्स का. ऐसे मौके अमूमन तौर पे आपको मिलते नहीं है, ऐसे मौकों को आपको भुनाना पड़ता है. ये अगर कैच होता तो वापस पवेलियन की तरफ लौटते नए बल्लेबाज. और जो सोचा था वही हुआ. अमूमन तौर पे देखने को मिला है, कैचेस जब छूटते हैं तब लगते हैं लंबे लंबे छक्के. बहुत बढ़िया शॉट यहां पे अक्षय के बल्लों से. आज बहुत छक्के देखने को मिलेंगे. और फिर से बल्ला घूमा, और मिलेंगे 6 रन.
स्ट्राइक पे गौरेशा है और नए गेंदबाज केदार। यहां से काफी किफायती गेंदबाजी करनी होगी बालपुरुष ब्लास्टर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि अभी तक काफी रन लुटा चुके हैं पिछली ओवर में। ओ फुल टॉस गेंद मारने का मौका, ठीक से बल्ले पे नहीं लिया गेंद को। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर 44 रन यानी 44 रन होता हुआ कोकन वुल्स का। ओ फुल टॉस गेंद उठा के मारा है और शायद चौका मिलेगा। ओरेला झिंगा लला और बढ़िया शॉट पिछली गेंद पे, पूरे 4 रन बटोरे बल्लेबाज ने। ओ बढ़िया गेंद और डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक यहां पे देखने को मिला गेंदबाज द्वारा। केदार, अच्छी गेंदबाजी केदार की। पहली गेंद पे चौका खाया, फुल टॉस थी गेंद, लेकिन बढ़िया कमबैक यहां पे केदार द्वारा देखने को मिल रहा है हमें इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी अभी तक बालपुरुष ब्लास्टर्स की। और ये अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ताकत नहीं और फील्डर मौजूद, लेकिन 4 रन। माफ कीजिएगा, पिछली गेंद पे चौका नहीं छक्का था। बढ़िया शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे इस बल्लेबाज के बल्ले से, और इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़कर 54 रन अर्धशतक होता हुआ कोकन वुल्स का। और एक बढ़िया कमबैक, बढ़िया गेंद केदार की। पहले चौका खाया, उसके बाद कमबैक करते हुए डॉट बॉल, फिर छक्का लगा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, उसके बाद दोबारा बढ़िया कमबैक। कुल मिलाकर बेहतरीन गेंदबाजी केदार द्वारा। दोनों का पलड़ा बैलेंस रहा है, कह नहीं सकते कौन जीतेगा इस मुकाबले को। फिर से एक बढ़िया गेंद, शॉट थर्ड मैन की गलती और मिलेंगे 4 रन। थैंक यू डीजे। कोकन वुल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन। कुल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है अभी तक। यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। कोकन वुल्स को थोड़ा सा पलड़ा भारी, और ये बैटिंग पावर प्ले, फील्डिंग में होगी तब्दीली, और यहां से लगता है कोकन वुल्स को एक आसान सी जीत मिलने वाली है। फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का ओवर, इसी ओवर पे सभी की नज़र,
और सारे दर्शक सांसें थामकर बैठे हुए इस मुकाबले को देखने के लिए। और ये लो फुल टॉस गेंद, अच्छा प्रयास लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड के साथ 1 रन मिलेगा कोकन वुल्स को, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 59 रन होता हुआ। अक्षय और गौरेश की काफ़ी अच्छी साझेदारी, यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों द्वारा। खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, लेकिन दूरी प्राप्त नहीं की, फील्डर मौजूद और ये आसान सा कैच। और ये बढ़िया शॉट, तीर की तरह समान सीधा मारा है शॉट को, बढ़िया शॉट, 6 रन। पिछली गेंद पे अक्षय को वापस जाना पड़ा और गौरेश ने बढ़िया छक्का लगाया इस गेंद पे। और ये बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक यहां पे देवेंद्र द्वारा। स्कोर 65 रन होता हुआ कोकन वुल्स का। यहां से इस मुकाबले को जीतना काफी आसान रहेगा कोकन वुल्स को। शायद कुछ औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की। और ये बल्ला गया घूम, बढ़िया शॉट, लेकिन दूरी प्राप्त नहीं की और ये आसान सा कैच। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन देवेंद्र द्वारा। और स्टार बल्लेबाज कोकन वुल्स के सतीश आए है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कोकन वुल्स के कप्तान। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, लेकिन कठिन सा कैच था, लेकिन कैच को गंवाया। ये सतीश ठोकड़े बहुत ही स्टार खिलाड़ी है, इनके पास नूर भी है, गुरूर भी है। कोहिनूर होगा इंग्लैंड के पास, लेकिन हमारे पास सतीश ठोकड़े है। पांच ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 66 रन कोकन वुल्स का। यहां से 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत कोकन वुल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए।
गेंद थमा ही है सुशांत के हाथ में, और ये बहुत लालच देते हैं बल्लेबाज को और विकेट चटकाते हैं। सभी जानते हैं इस गेंदबाज के बारे में, बढ़िया लेग स्पिनर, लेकिन स्ट्राइक पे भी उतने ही खतरनाक खिलाड़ी, ठोकने वाले ठोकड़े। ओ बढ़िया गेंद, थोड़ी सी वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सुशांत द्वारा, अच्छी शुरुआत यहां पे पहले ही गेंद से, बढ़िया गेंदबाजी सुशांत की। पिछले ओवर में काफी महंगे रहे थे लेकिन एक विकेट भी चटकाया। और एक फुल टॉस गेंद, मारने का मौका लेकिन मौके को गवाया। और ये अपील, ये छोटी सी अपील कीपर द्वारा, शायद थोड़ा छकाना चाहते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं। कोकण वुल्स जानते हैं, सतीश ठोकड़े जानते हैं, पुंडलिक जी जानते हैं कि इस मुकाबले को जीतना काफ़ी आसान रहेगा यहाँ से, इसलिए सूझबूझ भरी पारी खेलेंगे, ज़्यादा जोखिम भरे शॉट्स लेने का प्रयास नहीं करेंगे यहाँ से, ऐसा लगता है। लेकिन सतीश ठोकड़े हार्ड हिटर, और थोड़ी सी गेंद घूमी, 30 यार्ड सर्कल के फील्डर मोहिदीन वहां पे मौजूद थे, लेकिन कुल मिलाकर एक सिंगल रन। बढ़िया गेंदबाजी सुशांत द्वारा। आप सोचिए कि सुशांत ने ठोकड़े को खामोश रखा, मतलब किस दर्जे की गेंदबाजी रहेगी ये। मिडल स्टंप का गार्ड, पुंडलिक आए, पुंडलिक बप्पा आए बल्लेबाजी के लिए, काफी दिग्गज तजुर्बावान खिलाड़ी, लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। और दोबारा सुशांत अपने बॉलिंग एंड से गेंदबाजी करने के लिए, और ये बढ़िया ग्राउंड शॉट, सीधा तीर की तरह स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग सुशांत द्वारा। सिर्फ 4 गेंदों में अभी तक 1 रन दिया है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी सुशांत द्वारा, खामोश रखा है दोनों बल्लेबाजों को। और ये बप्पा को वापस जाना होगा, क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंद। पूरी टफ फाइट दे रहे बालपुरुष ब्लास्टर्स, यहां पे मुकाबले को पलटाने का मानदा रखते हैं सुशांत। बढ़िया गेंदबाजी, पहली 4 गेंदें सिंगल रन, और यहां से 9 रनों की जरूरत। मुकाबले को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हुए सुशांत, पिछले ओवर तक लगा था कि आसान से जीत मिलेगी कोकण वुल्स को, लेकिन पूरी जान लगाकर खेल रहे बालपुरुष ब्लास्टर्स। जानते हैं ये नॉकआउट मुकाबला है, एलिमिनेटर का मुकाबला बालपुरुष ब्लास्टर्स और कोकण वुल्स के बीच। विकेट कीपर द्वारा फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, ओ बढ़िया गेंद, अच्छा लेग स्पिन, लेकिन वाइड। यहां से एक रन भी काफी महंगा रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम रनों की जरूरत जीतने के लिए, और यहां से सिर्फ 8 रनों की जरूरत सुशांत की। अभी तक बेहतरीन ओवर, और ये उठा के खेला है, फील्डर मौजूद, और ये बेहतरीन कैच। कैसे करते हो भाई ये, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मार्वलस कैच।
और 8 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर इस मुकाबले का, एलिमिनेटर का मुकाबला। यहां से जो जीतेंगे वो खेलेंगे क्वालिफायर 2 में गुरुनाथ यंग डायनामाइट्स के साथ। आखिरी ओवर, 8 रनों की जरूरत और गेंदबाजी की कमान सौंपाई है निशांत के पास। मैं जानता हूं इस निशांत को, साई गणेश रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में आखिरी ओवर इन्होंने ही किया था। आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्कों की जरूरत थी। पहले 2 गेंदों में तो 2 छक्के लुटाए, लेकिन तीसरी गेंद यानी ओवर की आखिरी गेंद काफी बेहतरीन की थी। यहां पे सुशांत ने बता दिया है कि बढ़िया गेंदबाजी कैसी होती है। निशांत और ये खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल और यहां से सिर्फ 7 रनों की जरूरत है। ऐसी गेंदबाजी यहां पे काम नहीं आएगी। सभी सांसें थाम के बैठे हुए हैं, मेरी भी धड़कनें तेज। 7 रनों की जरूरत आखिरी 6 गेंदों में। यहां पे 2-3 खिलाड़ियों ने बता दिया है बाल पुरुष ब्लास्टर्स के 1 और 1 11 होते हैं। और ये डॉट बॉल, मैंने जैसे कहा था 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 11 ही है। और सुशांत और निशांत की जोड़ी दोबारा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सतीश ठोकड़े जो कि टीपीएल के बेस्ट बैट्समैन अवार्डी थे और यहां पे उनको छकाना काफी मुश्किल भरा काम। बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद बढ़िया गेंद और 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत। माफ कीजिएगा, फील्डर मौजूद और ये अच्छा प्रयास, बढ़िया एफर्ट्स वहां पे उस फील्डर द्वारा। माफ कीजिएगा, 7 रनों की जरूरत थी, दूसरे के लिए दौड़े और ये रन आउट। तुषार को वापस जाना होगा। सतीश ठोकड़े स्ट्राइक चाहते थे और थोड़ी सी नाराजगी यहां पे फील्डर्स के बीच। अगर मेरी निजी राय ली जाए तो मैं केदार को 100 में से 200 दूंगा। इतनी बढ़िया फील्डिंग, ये कैच का कोई मौका नहीं था और यहां से 6 रनों की जरूरत। बढ़िया फील्डिंग केदार द्वारा, वेल डन केदार। आखिरी 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत। मुकाबले को पूरी तरह पलटाया है सुशांत और निशांत ने। आठ विकेट गिर चुके हैं अभी तक कोकोनूल्स के। 2 विकेट अगर लिए तो मुकाबला जीतेंगे बाल पुरुष ब्लास्टर्स। और ये उठा के मारा है ठोकड़े ने और विकेट कीपर का कैच। बहुत ही बढ़िया कैच और बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और ये आखिरी विकेट, अभी जो आएंगे अगले बल्लेबाज वो आखिरी विकेट होंगे कोकण वुल्स के। सतीश ठोकड़े जो कि इतने बेहतरीन बल्लेबाज ऐसे प्रेशर में खेल नहीं पाए, वापस लौटना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। मैं जानता हूं कि क्या प्रेशर रहता है ऐसे मुकाबलों में ऐसे कैचेस पकड़ना। हालांकि कैच काफी आसान थी लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। अभी तक निशांत की उम्दा गेंदबाजी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये जो केदार खिलाड़ी है यहाँ पे खड़े, इनको तो मैंने 200 नंबर मैं इनको 200 नंबर दे चुका हूँ 100 में से। बहुत ही बढ़िया एफर्ट्स केदार द्वारा।
3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। केदार जिन्होंने बढ़िया फील्डिंग की, कल इनका जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे विश यहाँ पे केदार को। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश फ्रॉम जेनोरा प्रीमियर लीग कमिटी एंड ऑल द commentators and organizers. और ये फुल टॉस गेंद, मारने का मौका लेकिन वाइड बॉल। मेरी माने तो अच्छी गेंद थी, शफल किया था बल्लेबाज ने लेकिन डॉट बॉल। आखिरी विकेट है, कोकण वुल्व्स जानते हैं यहाँ से विकेट नहीं गंवाएंगे। उठा के अगर खेलेंगे तो फील्ड जो सजाई है लेग साइड में काफी खुली हुई आउटफील्ड। और मैं सभी दिल के मरीजों से कहना चाहता हूं कि कृपया आराम से इस मुकाबले को देखें, ज्यादा प्रेशर मत ले अपने आप पर। और सभी को कहता हूं कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें क्योंकि काफी रोमांचक मुकाबला। और एक बढ़िया गेंद निशांत, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी निशांत द्वारा। और ये फील्डिंग यूनिट मेरी मानिए तो सबसे बेहतरीन फील्डिंग यूनिट यहां पे ये बता दिया है बालपुरुष ब्लास्टर्स ने। बढ़िया लीग के मुकाबले खेले, उन मुकाबलों को जीता और इस एलिमिनेटर मुकाबले में भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। आखिरी 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी लेकिन सुशांत और निशांत, काफी राइमिंग वर्ड भी है दोनों के नाम के, दोनों ने मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया है। 2 गेंदे 5 रन। ओहो माय गुडनेस, बहुत बड़ी अपील। और ये वाइट, 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। ये अपील किस लिए थी मैं भी जानता था। आप चाहते हैं कि ये वाइट ना मिले इसलिए ये अपील थी। कुल मिलाकर काफी बेहतरीन गेंदबाजी निशांत की। अगर आप ये वाइट की बात करें तो ये अच्छा निर्णय निशांत का कि वाइट ऑफ द ऑफ स्टंप्स गेंदबाजी करना काफी बेहतर रहता है टेनिस बॉल क्रिकेट में। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 गेंदे 4 रनों की दरकार यहां पे कोकण वुल्व्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। फिर से खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और ये ऐसी गेंदबाजी आपको नहीं करनी है निशांत। अभी तक बढ़िया प्रदर्शन रहा आपका, पिछले 4 गेंदें आपने काफी बेहतरीन की और आखिरी 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। आखिरी विकेट है, शायद उतना हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है क्रीज पे मौजूद। आप ऑफ स्टंप के कुछ बाहर गेंद करेंगे तो काफी बेहतरीन गेंद रहेगी। लेकिन पूरा क्रेडिट सुशांत, निशांत और केदार को। और एक बढ़िया गेंद, एक के लिए दौड़े, दूसरे की मांग नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी विकेट है। आखिरी गेंद 2 रनों की जरूरत। अगर यहां से ये मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर में जाएगा मुकाबला और सेकंड इनिंग की टीम करेगी पहली बल्लेबाजी। और सभी दर्शक यही चाहते होंगे कि ये मुकाबला टाई हो और सुपर ओवर में जाए क्योंकि और रोमांच मिलेगा आपको। आखिरी गेंद 2 रनों की जरूरत, साथ ही साथ आखिरी विकेट। अगर फील्डर के हाथों में कैच जाता है तो बाल पुरुष ब्लास्टर्स की जीत। अगर चौका छक्का डबल मिलेंगे तो कोकण वुल्व्स की होगी जीत। अगर सिंगल मिलेगा तो होगा मुकाबला टाई। ये मुकाबला बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो 2019 में खेला गया था फाइनल, उसी तरह। और निशांत यहाँ पे मलिंगा का रूप निभाते हैं या नहीं पता नहीं। उन्होंने तो मुकाबला जिताया था मुंबई इंडियंस को और वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आखिरी गेंद निशांत की, 2 रनों की जरूरत। ओ बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद,
धीमांग और खराब फील्डिंग, 2 की प्राप्ति। मुझे पर्सनली काफी खराब फील हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन था बाल पुरुष ब्लास्टर्स का। निशांत और सुशांत की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी थी गेंदबाजी के लिए। और वो जो मिड ऑफ के फील्डर थे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे, थोड़ी सी मिस फील्ड, 2 रन लुटाए और मुकाबला कोकण वुल्स के पलड़े में जा गिरा। लेकिन मैं बाल पुरुष ब्लास्टर